हाय फ्रेंड्स, आई एम अपर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम वाराणसी में हैं और हम वाराणसी में होटल बुद्धा में रुके हैं। After a long drive, we finally reached the Hotel Buddha Castle. The hotel is located in Jaitpura, Varanasi, and the nearby Ghats and Kashi Vishwanath temple are only 2.6 kilometers from here. Let's quickly check out our rooms. This is our room. तो चलो रूम टूर कराती हूँ। ये रहा टीवी, ये रहा टी किट और ये रहा बेड और यहाँ पे बालकनी है जहाँ पे हम जा नहीं सकते क्योंकि कीड़े आ जाएंगे। और ये रहा स्टोरेज स्पेस। और ये रहा बाथरूम। The bathroom is nice and clean. रूम छोटा सा है लेकिन कलरफुल है। ये ऑरेंज कलर के वॉलपेपर मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये रहा सिटिंग स्पेस। रूम से थोड़ा अलग है। This is the balcony. I will show you the surroundings properly in the morning. This is our second room. The room is small compared to our other room. Though the room is small, it has all the basic amenities like a tea kit, TV, storage space and a sitting area. We had our dinner at the hotel itself. हमने सोचा था 80 घाट जाएंगे और खाना वहीं से खा के आएंगे, लेकिन सब बहुत थक गए थे तो सोचा डिनर यहीं पे कर लेते हैं। The waiter is really nice and polite. He suggested we should order tea for us and French fries for Oliva as the food would take some time to arrive. Here we have French fries and tea. हम सब ने ओलिवा से थोड़े थोड़े फ्रेंच फ्राइज ले लिए। फाइनली खाना आ गया। We ordered mixed veggies, शाही पनीर, दाल तड़का, रोटी, जीरा राइस एंड सैलड। देखने में बहुत यम्मी लग रहा है।
The food is very good. गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सनी डे। चलो बाहर चल के देखते हैं व्यू कैसा है। Now we are relaxing after getting ready for breakfast. Let's go for breakfast. The lift is not working, so we had to take the stairs whenever we went downstairs. ब्रेकफास्ट के लिए हम नीचे आ गए। ब्रेकफास्ट में है उपमा, ब्रेड पकोड़ा, सांबर, इडली, आलू भाजी, पूरी, जूस एंड ब्रेड। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ, जो भी हो खाना टेस्टी था। This is a sitting area, beautifully decorated with amazing mural design on the wall, looking absolutely gorgeous. We spent some quality time there, sipping our tea and relaxing. This is the reception area. This wall painting is looking so beautiful. Let's take some photos here. We booked 2 rooms. One is a Queen Plus family room and the other one is a deluxe room. The price is 12,000 rupees for both of the rooms for one night.
Buddha Castle is a 3-star budget hotel. The hotel is 2.5 kilometers away from Varanasi Ghats and the Kashi Vishwanath temple. They have a small parking space, but the roads to the hotel are narrow and congested. The hotel is nice and the staff is friendly. Though they have limited breakfast options, our stay at this hotel has been a good one. I am finishing this video here. Please subscribe to my channel for more exciting videos. मिलते हैं next video में. Bye.